Okay, so good morning. Uh, my name is Himanshu Modi and I'm the technical director of the company. Okay, and the product Secura Guard, which is going to help you for this the requirement which you has raised. Okay, now let me tell you first about our company. Our company is Senda Group, which is a 15-year-old company, and in our group we have different companies. We have a resorts in Goa. We have a Dudhsagar and Daywatch Resort in Goa. We also have a retreats business, means we do yoga retreats, we do a total body rebalancing retreats, this type of health related, wellness related programs we do for the people. And we also have a magazine called Your Wellness. And the product which you see, Secura, which we have started developing since 2011. And started with the Engage application. Then we have focused on all type of data protection. Okay. Now you are aware that your data, whatever the data you generate right now in your organization, it is not in your control, right? Means anybody is allowed to copy, anybody is allowed to share anything with your data, right? Asim? Correct. Yeah. So now to overcome this issue, so first is our mission. Our mission is to put you back in control of your data. That is our mission. So now you can see that what our product is going to provide you, right? Basically, we are going to provide you control over your data. Okay. So you are going to control your data. Your employee will not able to copy, forward, share anything without your permission. Okay. And if they do, with after permission also, you have a log that which data is shared by which employees, when it is shared, where it is shared, all this information you are going to come to know with this software. Now, benefits of this Secura Guard product to protect your tele data. So first thing, we provide you thief proof, means your staff or any hackers who connects to your computer will not able to copy your data, theft your data. Simple as that. We also provide you safeguards from mistakes or disasters. So suppose your might be accidentally you delete the data, your might be you're working on the data and because of power fluctuation, your data might get lost or hard disk might get corrupted or my hard disk might be not working, then your data might get lost, but you don't have to worry about this because Secura is going to provide you the solution. Even we provide you solution over the ransomware protection. So if your computer is hacked by the ransomware attack, so you don't have to worry, your data is secure. We also provide you secret and invisible mode. So what I'm trying to say, secret and invisible mode here is that we also provide you the area where you can securely put your data in a private area where you, when you enter with the private area password, then you are able to view the data, otherwise you won't able to view the data. Okay, so that provision we also provide. We also provide you intruder proof. So suppose in your organization, your computers are started and suppose somebody is logged in without your permission and they enter the wrong password or something is happened, then automatically you will get alert in the mail and you can block the login device, means you can block the device or you can also burn the data of that device. Okay. We also provide you protection from the spying tools. So for example, your computer is malware by the spying tool and which is going to record your data, whatever the activity you are doing, screen recording they normally does. So you don't have to worry because in our application, screen sharing, screen recording is not possible. Okay. So do you see the benefit in our product, Ashi? Yeah, I see that. Yeah. Okay. So now I will showcase you the actual product, how it works, so you can understand. So you can see the login screen. Can you see the login screen? Yeah, I can see that. Okay, so let me enter the password. Now I'm starting the blank screen manager. Why I'm started the blank screen manager? Otherwise you won't able to see my screen, what I'm doing actually. Okay.
Now in your organization, generally people keep your data like this. For example, in my organization, means in my computer right now, for the demo purpose, I have had a Tally application and I also have a data. Normally this data is like this, right? Correct. Atik? So now I can do anything with your data, this data. I can delete, edit, anything I can do, right? So to protect this, we provide you a solution in the settings module called folder lock. Okay, sorry. Yeah. Okay, now you can see. So here you can see the activate folder lock. I will enter my admin password because folder lock protection is controlled by the admin password. So I will enter my admin password and now folder lock module will be started. Can you see the folder lock module now? Yeah, I can see that. Okay, so let me show you in parallelly so you can easily understand how it's worked. Okay. Now when I go to the folders, whatever the folder where the data is kept, I need to select that path. I can add multiple folders. Okay. Now I go to the tally, I can select the data. And now when I click on the three dot, I will enable and mark as a hidden now. Now when I mark as a hidden, what our application does, your folder will be there in your computer, but nobody will be find out that computer folder is there. Now you can see the error, what the error you are getting. Atif? Cannot find C Tally. Yeah, I'll means check this folder again. is there, but in the Windows Explorer, you can't see the data. Even in the DOS command prompt, for example, I will start the DOS command prompt. So it's not only the Windows mode, DOS mode also. You can see element not found. So your data is there, but nobody will be able to find out where is the data. First thing is that. Second thing, then you will ask how this Tally application will work, right? Because Tally application, how it will work, right? So what we have provided in our application, program features, okay? So which application you want to select, the application you need to select which you want to allow to run this data. So I have selected the Tally application now. And when I click on the three dots, I have not enabled the Tally application to view the data. Now you can see when I go to the select company, it's showing me data is not there, right? No company is on the list. You can see this. Change the path and check. You can see the path is C drive colon select data because data is in my data folder. No? Data Yeah, folder was there. Okay. So you can see the correct. same data C colon /erp9 slash data where my data is there. You can see in Tally. Now I am allowing Tally to see the data. I allowed Tally to access the data, Tally application to access my data. Okay. When I go back and select company, the same path I can see now data. You can see even here other application will not able to find the data folder still. Even in the DOS command prompt also you will see I'm not able to see the data. You're getting me? Yeah, I'm getting it. So this is how we provide you security. Means in your data is there, but nobody will be find out where's the data and they are not able to copy the data. Second thing, we also provide you protection. So now you will might be asked question that if I open the data and take the backup to the Tally, how you are going to protect me, right? Right. Because Tally also backup solution is there. Okay. So what we have provided here options. So we are going to provide you an admin control panel. So let me show you. Just hold on. We are going to provide you the admin control panel where, just hold on. Can you see my screen? Yeah, I can see that. It's an AnyDesk. No, means you can't see my screen. Just hold on. Now you can see my screen. You can see my screen. Can you see my screen now? Yeah, I can see Hello. that. Now you can see, right? So now you can see
this is my employee management application. I can see my all the employees here. Okay, and what I need to do, I need to provide an access. How I can do, I can provide them access that which suppose this is Ashish, for example, and if I want to protect my tally data, what I need to do, hard drive or removable device, what I need to do, I need to apply automatically data security. So what type of data I want to select, so I can select from the configure, sorry, module master settings, file extension. So because see tally has these extensions, right, 001 and tbk file extension, which is we want to secure, right? ओके, सो ये जो भी एक्सटेंशन है ना, मुझे यहाँ पे ऐड करना है ना, मैं ऐड कर सकता हूँ. ओके, आई कैन सिलेक्ट दिस एक्सटेंशन एंड आई गो टू द एम्प्लॉय मैनेजमेंट, सेटअप एम्प्लॉयज. नाउ व्हाट आई कैन डू, अभी मुझे कोई भी एम्प्लॉय, ये समझो कि कोई एक एम्प्लॉय है, राइट, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, ऑटो एनक्रिप्शन ट्रू करना है. अगर वो ये फाइल के एक्सटेंशन, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ JPG 001 एक्सटेंशन जो बैकअप फाइल होता है, वो मुझे उसको मैंने अलाई कर दिया और अप्लाई कर दिया. ओके, सो व्हाट डज दिस डज, कि उसके कंप्यूटर में जैसे ही वो कोई फाइल सिक्योरिटी मतलब डाउनलोड करेगा, मतलब सॉरी बैकअप लेगा, ऑटोमेटिकली उसका फाइल एनक्रिप्ट हो जाएगा. जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में भी ऑलरेडी है. यू कैन सी दिस फाइल एक्सटेंशन PDF, ये सिक्योर एक्सटेंशन फाइल्स. सो लेट मी ओपन द एक्सेल. अब ये देखो, ये फाइल देखो कैसे दिख रहा है, एनक्रिप्टेड है. सो ये डेटा कोई चोरी करके लेके जाएगा, उसके वहां पे भी अगर सिक्योरा परचेज करेगा, सिक्योरा भी डाउनलोड करेगा, लेकिन वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज की इज इन योर कंट्रोल. जो भी तुम्हारा की है ना, वो तुम्हारे कंट्रोल में है, एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है. ओके, सो लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो कर पाए काम, ओके, यू वांट दैट दे आर अलाउड टू वर्क, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. व्हाट यू नीड टू डू, इनको अलाउ करना पड़ेगा आपको. जैसे अभी मुझे करना है, फॉर एग्जांपल सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर से. ओके, सिक्योरा फाइल एक्सप्लोरर है, जहां पे मैं जाऊंगा और ये मेरा डेटा है, उसको मैं यहाँ पे डेटा बैकअप है, उसको मैं इंस्टेंट डिक्रिप्ट करूंगा. तो मेरा डिक्रिप्ट का पासवर्ड डालूंगा, या मैं प्राइवेसी रिक्वेस्ट करूंगा मेरे एडमिन को, और मैं डिक्रिप्ट कर पाऊंगा. आर यू गेटिंग मी? Yeah, I'm getting you. या सो इस तरह से हमारा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का पार्ट चलता है. ओके, और दूसरा, नाउ ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वन मोर फीचर, विच इज नाउ, आगे मैं टैली क्लोज कर देता हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, जो मेरा ये था प्रोग्राम फोल्डर में जाऊंगा मैं, जो मेरा टैली है उसमें मैं और एक ऑप्शन ऐड करूंगा, टैली मोड. अब ये टैली मोड क्या करेगा, टैली मोड में हमने क्या किया है कि आपके जितने भी यूजर है, पर यूजर हम 5 GB स्पेस देते हैं, क्लाउड स्पेस हमारा सिक्योरा का फ्री कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, पर यूजर 5 यूजर. तो अभी आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज है? 7 to 8. सो समझो 7 यूजर है, तो 35 GB यू विल गेट अ क्लाउड स्पेस एज अ कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, सो आपका अभी जो करंटली मेरा जो डेटा है, टैली का डेटा, वो एनक्रिप्ट होके वो मेरा डेटा अभी ये देखोगे आप, तो ये सब सर्वर पे सिंक होता जाएगा, ऑटोमेटिकली सिंक होता जाएगा. ओके, तो जो भी मेरा डेटा है ऑटोमेटिकली सिंक होगा, एनक्रिप्टेड डेटा. ओके, और दूसरा फायदा क्या है, चलो एनक्रिप्टेड सिंक हुआ, तो समझो कि आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया या कुछ भी हुआ, तो आप यहाँ से डेटा रिकवर कर सकते हैं. किसी ने आपका डेटा अगर समझो कि डिलीट कर दिया है, ओके, किसी ने आपका डेटा डिलीट कर दिया, तो आप वर्जन मैनेजर में जाके पुराना वर्जन से डेटा रिकवर कर सकते हैं. मतलब एंट्री कोई डिलीट हो गई या कुछ भी हुआ, आप डेटा रिकवर कर सकते हैं बैकग्राउंड में जाके. यू कैन सी दिस. Yeah, I can see that.
ओके, सो दैट इज आल्सो फीचर इज देयर. सो मतलब कि कब समझो कि आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया तो डोंट वरी, यू कैन इंस्टॉल सिक्योर ऑन अनदर मशीन और आपका जो भी डेटा है आप रिट्राइव कर सकते हैं. What is the cloud space? 5 GB पर यूजर. अच्छा, अगर आपको चाहिए कि आपके वहां पे भी क्लाउड सर्वर बना के चाहिए ऑफिस में, तो हम वो भी बना के दे सकते हैं, कस्टम क्लाउड. I got that. ओके, सो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू लिनक्स बेस्ड, हम सिस्टम डाल देंगे और लिनक्स बेस्ड आपके वहां पे क्लाउड सर्वर बना के दे देंगे. ओके, Linux and Windows में conflicts नहीं आएंगे? नहीं आएगा, जरा भी नहीं आएगा. ये हमारा क्लाउड सर्वर जो भी है लिनक्स बेस्ड ही है. Nice. या या What are your plans? so sorry, Nilofer, Yes, sir. so have we shared the plan? Yes, sir. दिया है उनको, प्राइसिंग दिया है कि नहीं सर को? नहीं सर, नो. तो मैं वही तो पूछ रहा. ओके, सो अभी करंटली हमारा ऑफर चल रहा है. वी हैव अ ऑफर ऑफ सिक्योर गार्ड. सो ये ऑफर मेरा आज ही लास्ट डे है. ओके, सो करंटली यू हैव अ मल्टी यूजर लाइसेंस, राइट? हेलो, Yeah. I have मल्टी यूजर multi- का हमारा प्राइसिंग है 2450 पर यूजर. ओके, आपके ये कितने यूजर है? fluctuate करेंगे हर साल कि ये constant नहीं, रहेगा? ये अभी आपने ये एनरोल किया तो ये सेम रहेंगे आपके लिए प्राइसिंग. और और इसमें renewal आपको का फायदा क्या होगा? रिन्यूअल में आपका 2450 लगेगा पर यूजर पर ईयर. जो ऊपर वाले जो प्राइसिंग है ये ईयरली है. ये नीचे वाला वन टाइम चार्जेस है. 10,000 और 5,000 जो है वो वन टाइम चार्जेस है. प्लेटफॉर्म सेटअप चार्जेस, मतलब मैंने आपको बताया ना, हम सिक्योर सेटअप करके देंगे आपके वहां पे. वो प्लेटफॉर्म सेटअप करके देंगे जहाँ पे आपका जो भी डेटा वो सिक्योरली मेंटेन रहेगा. तो ये आप प्लेटफॉर्म, एक डिवाइस का चार्ज बता रहे हैं 2450 प्लस 10,000 and 5,000. ये मेरा ये 10,000 और 5,000 इस 15,000 वन टाइम चार्ज है. आपका समझो 10 सिस्टम है, 20 सिस्टम है, उससे हमको कोई लेना देना, बिकॉज हमारा सिक्योर प्लेटफॉर्म वहाँ पे फर्स्ट सेटअप होगा, उसका चार्जेस है वन टाइम. अच्छा. ओके, और वो 2450 पर सिस्टम लगेगी. पर सिस्टम लगेगा आपको, ठीक है. वो लाइसेंस कॉस्ट है. I'll get back to Nilofer. ओके, सो फॉर एग्जांपल 2450 और आपका 8 यूजर है तो 19,600 आपको ईयरली कॉस्ट लगेगा. अच्छा. 19,600 मतलब महीने का अगर डिवाइड बाय 12 भी करूं तो महीने का आपका 1633 रुपीज होता है, जिसमें आपका डेटा सिक्योरिटी, बैकअप, सब कुछ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा. तो अगर आप एक देखोगे तो ऐसे बैकअप तो 5 GB है ना पर सिस्टम. नहीं, आपका 8 यूजर है ना, तो 8 यूजर होगा तो 40 GB मिलेगा सर. टोटल 40 GB ही मिलेंगे ना. हाँ 40 GB, लेकिन आपका टैली का 8 डेटा कितना जीबी का रहेगा? टैली का डेटा. हाँ ठीक है, वो तो बहुत कम होता है केबीस में. इसीलिए ना, इसीलिए तो हमने उस तरह से दिया है कि मतलब आराम से आपका डेटा उसमें आ जाए. यू गेटिंग मी? Yeah, I'm getting you. I'll get back to Nilofer once. Let me discuss Sure. with. Sure, Yeah. sure. That's Any what I'll questions you have? Any questions? No, I got the entire program. Okay, good. Thank you.